Okay, so thank you so much, and we are here with Ms. Sara Sadiq, and it's a great honor that she could join us today. And we have a wonderful audience as well, so we want to thank everyone for joining. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इसमें participate कर रहे हैं. So moving forward, हमारी जो इस time guest हैं, Sara Sadiq, especially want to welcome you to this Zoom session, and really looking forward to all the discussion. Hopefully बड़ी ज़बरदस्त discussion होगी और इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी होगा. So thanks to you for taking out time. आपने इतने busy schedule में से time निकाला. और so ज़रा शुरुआत करते हैं. तो आप ज़रा मुझे बताइए कि आपकी अपनी जो जर्नी है या अपना जो एजुकेशनल सफर है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आप इधर तक कभी पहुंची हैं, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालें पहले प्लीज. Thank you for this wonderful opportunity for to speak to my friends, to my colleagues, and members of the Christian community about this journey that I've been on, especially because ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक religious minority होने के नाते हमें एक we understand the many structural reasons why it is hard for students and for people to get into careers and so on. So मेरा सारा शुरू होता है LUMS के साथ. I got an admission into LUMS, I got my degree. उसके बाद मैंने FC college में काम किया. Actually the same year when my brothers joined, Musa and Harun joined FC college for their undergrad. I was working at the CPPG with Dr. Said Shafkat and so on. So I've worked as a research assistant on multiple projects. Uske baad phir maine sahafat shuru ki, and I became an editor with the Pakistan Today and then joined the Express Tribune. And finally I worked in Dawn from 2016 to when I got my admission in my PhD program. And I understand कि आज जो हमारी जो conversation है, it's supposed to be around how is it possible कि एक undergrad degree के बाद आप foreign PhD के लिए चले जाते हैं. So इसका छोटा the straight up response to that is कि it's not very easy to do that, right? आपको एक बहुत ज़्यादा अपनी profile बनानी पड़ती है before you can get an admission in such a college. So I mean that has been my educational journey so far. I have also been involved with activism with various groups and so on. I've done protests, campaigns, ये सारी चीजें अपनी society के अंदर, अपने माशरे के अंदर embed होने से what it allows you to do is it allows you to come up with a stellar project, right? आपका सारा जो दारोमदार होता है PhD research का सारा कुछ, it depends on your project, it depends on what you're trying to study and what your questions are, right? Right. So Sara ji, आपसे जरा थोड़ा सा मैं इधर I'm sorry to interrupt, but हमारे current students भी इसको देख रहे होंगे बाद में जब हम इसको live उसको post करेंगे वहाँ पे. So आप बताती जाएं अगर प्लीज कि आपने क्या study भी किया after your 10th grade metric या so on, so that लोग जो कि पीछे जा रहे हैं जी थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं ताकि बच्चे जो है आजकल वो जरा उनको एक विजन मिले कि जी क्या पढ़ेंगे तो यहाँ तक किस टाइप पहुंच सके, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए while selecting your subjects, and क्या रीजन होना चाहिए, क्या आपको अपना पर्पस किस तरह से वो करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए. तो सारा कुछ एक अल्टीमेटली जाता है कि आपको अगर आपकी पसंद की और आपके बिल्कुल जबरदस्त सी बिल्कुल आपके जो सेटिस्फैक्शन वाली फुल फील्ड आइडेंटिफाई हो जाए तो वो भी प्रोसेस जरा साथ साथ बताएं. आई होप थोड़ा सा. हाँ, I mean one of the things that I will say allows you to get to where you're talking about is it was I'm going to go back to my O levels and everything, right? Like humanities मैंने किए O levels, A levels के अंदर business subjects थे.
लम्स के अंदर भी सोशल साइंसेस पढ़ी थी और सोशल साइंसेस में था एक मेरा रुझान उसकी तरफ, राइट. आई वाज इंटरेस्टेड इन लार्जर क्वेश्चंस अराउंड सोसाइटी, अराउंड पॉलिटिक्स, अराउंड these larger questions, like that we can research and look at as well. And this is what led me into journalism as well. This is one of the reasons why I was really drawn toward journalism as a career. In fact, it was a hard move for me to go from journalism, which I just really loved as my job, to studying to become a student again. But it all depends on, aap individually, aapka kya, aapki kis taraf, like what you're interested in as a person, right? And always allow your interests to lead your research and your career interests as well. That old saying that, when you start enjoying what you work on, then it's no longer work, right? It's your passion. So it's important to find your passion, find what drives you in society, right? Like for me, it was about learning about what's happening around me. ठीक है, मैंने city desk जब join किया Tribune में, तो I had a wonderful opportunity to learn so much about Lahore. Like खबरें हम, we imagine खबरें to be something like, अच्छा जी शहबाज शरीफ ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, उसने ये किया, वो क्या. But actually, when you go into, like how news is produced and how news comes about, you learn so many things about where you're living in, from, पानी किस तरह चलता है, सड़कें किस तरह बनती हैं. So just like having an interest in the place that you're living in, and learning about it, learning about everything that you find around yourself, and the things that you navigate your life through are a good starting point to find what drives you and what your passions in society are, right? So interrogate yourself, interrogate your interests. What are you interested in? What do you love doing? What do you kaun se courses mein aapke A's aate hain is a good place to start. Ke aapka rujhan kis taraf hai. So that's how I'll answer that question. बिल्कुल सही, ठीक है. सो आप लम्स गई और वहाँ पे आपने पढ़ाई की और वो उधर से आप फिर ग्रेजुएट हुई, जबरदस्त. ठीक है, उधर का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम तो एफसी वाले, हम तो लम्स के थोड़े से उसको बहुत भी लुक अप टू लम्स, और उधर की जो लेवल है आपका एफसी में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ जॉब करने का, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या कोई माइंडसेट में डिफरेंस है, कोई एटीट्यूड्स में डिफरेंस है? और जाहिर बात है उधर के बच्चे, मेरे ख्याल में उनको फुलब्राइट भी ज्यादा मिलती है, पिछले इंटरव्यू में भी बात हो रही थी. तो क्या तरीका कार हो सकता है कि हम जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, या ज्यादा क्रिश्चियन बच्चे जो होते हैं, कम ही होते हैं आपकी तरह के जो कि इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो क्या तरीका कार है कि सब उस लेवल पे पहुंच सकें? ये क्वेश्चन है. मतलब 2012 में मैंने फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे तो रिजेक्शन मिली थी. तो आई एम नॉट लाइक, ये मैं बात जरूर कहूंगी कि लम्स का जो मॉडल है, जो है कि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ जगहों से आते हैं और फिर वो एक जैसे बन जाते हैं, जिसके अंदर like it was very different from my experience at FC College, which I found to be far more open, far more attuned toward critical thinking and reasoning than I thought LUMS was. And it is very unfortunate that recently FC College let go of two very amazing professors who are one of the most foremost critical thinkers in Pakistan and have, informed my own research interests as well. So, like, it is this tradition and culture of critical thinking and questioning, which I thought that FC gave people, space for. And I still believe in it, because I don't think it is necessarily administrations that drive a university culture. FC ke students are far more dynamic, are far more out there, and have greater sociability, I will argue, than from my own experience at LUMS. And I'm saying that after just like working 1 year at FC College, I thought it was far more vibrant and dynamic in that way. In fact, it's far more happening and so on, right? So, but if you ask me to compare कि LUMS के बच्चों के ज़्यादा क्यों Fulbright admissions होते हैं as opposed to this, I will say it is because LUMS tries to cultivate
the image of what a successful person should be like, right? वो अंग्रेजी किस तरह बोलते हैं, वो dress up किस तरह बोलते हैं, उनकी एक cookie cutter एक method बनता है कि oh, by the end of these 4 years, like this is the set of vocabulary or, you know, like way of introducing yourself or projecting yourself. And it's all based on confidence and confidence in yourself. And that's all I'll say. Okay. I will not valorize LUMS as something that, you know, like is better than FC College in any way. I find FC College far more open and welcoming. But I will say it is about confidence. It is about developing your skills, speaking skills, presentation skills, writing skills सबसे ज़्यादा. ठीक है, writing पे काम करें. ठीक है. Just to clarify, question was not उनको अंडर एस्टिमेट वगैरह करने के लिए नहीं था, लेकिन आई थिंक दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है और अपनी अपनी पहचान है. उस लिहाज से डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा है और उस तरह से तो सब भी अपनी अपनी पहचान रखते हैं. तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आपने उसमें एड्रेस कर दिया है कि जो राइटिंग स्किल्स वगैरह हैं, इस तरह के स्किल्स ज़्यादा पॉलिश करने चाहिए ताकि आपको आगे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले. और सॉफ्ट स्किल्स वाइज ज़्यादा बेहतर होना चाहिए. बिल्कुल सही है. इस तरह से ये उसका आंसर आ गया. तो आगे चलते हैं. I'll just add something. हाँ जी. इसके अंदर one of the things that I thought was most helpful being at LUMS was the absolute departure from Ratta system. ठीक है? That regurgitating what you're reading is never going to be enough to get you anywhere. ठीक है? Knowing what is written or knowing all that corpus of knowledge is never enough. Even when we are writing our, you know, like papers or research papers, the whole idea is to see कि traditional तरीका क्या है इस question को approach करने का, and then to place yourself outside of tradition and find new novel ways of learning about something. This has been my approach toward research and my career in and of itself. कि अगर if this is the set path that everyone is doing, find something different, find something new and novel to bring to this field, or a different way of approaching this question. That's going to be key in like setting you up, you know, away from other people who might have, you know, like उन्होंने रट्टा फिट मारा होएगा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है. सही बात. जबरदस्त. So आपने आगे LUMS में जो है आपने ग्रेजुएशन की है एंथ्रोपोलॉजी में? नहीं, सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस. A broad social science degree. फिर उसके बाद आपने जर्नलिज्म ज्वाइन की और आपने उसमें आपकी क्या इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रहे, उसका थोड़ा सा बताएं प्लीज. सही. So when like मैं तो like desk के ऊपर थी, I was like a sub editor initially when I joined, लेकिन साथ साथ लिखना भी शुरू किया, and then I started writing long form features, and I realized what I was most interested in was questions of informal labor, like privatization, unions, and so on. So I started going to a lot of protests, press club के इर्द-गिर्द जो जितने भी like, you know, like protests होते हैं. So human rights and labor became a key area of interest. And then obviously being a Christian, तो you know, फिर you know, religious minorities के ऊपर भी बहुत reporting की. I've done a lot of reporting in Shantinagar, and I wrote a very long piece on you know, like how various Christian villages deal with the question of violence for Caravan magazine. So uska title hai Bearing the Cross. Or right. Yeah, so I'm trying to make a point that you pursued your interest, because of which your journey throughout was very, very, very genuine and, you know, real. So was this the key point कि जिसकी वजह से UT Austin took you, you know, gave you admission? What was that process? But let's just like, yeah, I'll come to that later, but let's just dwell on this. It's not just your interests that lead you, but it is also the drive to keep up to date with what's happening around you, right? Being embedded as a journalist was giving me that position where I could see how society was changing, where politics was going, what was happening, and it was giving me a position to analyze different things that were happening every single day, right? These are these analytical skills are what allowed me to, you know, like sort of make that big move away from being a Sahafi in Lahore to, you know, like a PhD student in at UT Austin, right? And it's cheese ke andar when I'll start talking about, you know, like how that whole process came about, like how I decided to apply,
what that application process looked like. I will say is that I wanted to play to my strengths, and that is extremely important when you're, thinking of applying for, like a research career. And I realized that mera jo lived experience tha as a religious minority in Pakistan, that was giving me a particular vantage point to view society from, right? So I played that up in my application as an anthropologist, especially because the whole point is to study society, is to study people and see how they build connections and how they make life possible together, right? So my position as a Christian allowed me the entry into that population I wanted to study. So that is something that was very useful as well. So learn about your strengths. Is it where you're from? Is it what you know? What language you know, for example, can be a huge strength in research. And what archives you might have access to, like say if you have like contacts in like, I don't know, Pakistan Bible Society, that's a really good way to sort of play up your contacts. कि यहाँ, कि मेरे पास ये archive मौजूद है, ये मेरे पास ये चीजें हैं जो कि मुझे allow करेंगी to develop a good research project. So, yeah, know your resources. Like, अच्छा, graduation के बाद आपका कितने साल का experience था और क्या वो matter किया, उसने matter किया for the admission? उसी नहीं matter किया. Yeah, it was my job experience that got me this. It wasn't anything else. I will say it but like no one. We do say that LUM students get Fulbright admissions, but actually when you go abroad you realize nobody knows what LUMS is, right? It is actually your skills, and it is you individually who they are giving admission to. They're not giving it to the institution necessarily, right? So सारी चीज के अंदर फिर my job experience is what mattered, because I had a lot of publications, and because this is a research degree that I was applying to, those publications really helped. The platforms on which I was publishing really helped. I mean, I got like published in New York Times. This is a name that everyone in America knew, right? And when they read it, they were like, oh, acha, iska to scene hai. Right? So ye choti cheezein hain jiske andar like you're trying to show ke acha, like mera kaam hai, and it's not that I need you, but in fact I can bring more information, knowledge to your institution. That should be the driver that should like lead this endeavor to apply and so on. सही है. So जो publications का process होता है उस पे भी थोड़ी सी आप बताएं कि किस तरह से आपने वो किया और किस तरह से आपने वो publications की. So मतलब PhD का तो सारा है ही लिखने का ना, ठीक है, तो why not start early? Why not develop a habit of writing, and not just writing anything, writing really well and analyzing something, right? So मेरा पहला जो शुरू में मेरे सिर्फ खबरें मैं लिख रही थी. I was covering different festivals, different events, different protests, इस तरह. But वहाँ से I developed like a larger project. I wrote a very long feature on privatization in Vapta, privatization attempts in Vapta, but also K Electric and so on. Yeah, so but the way you do this ideally is to first approach an editor. Like if you're a student and you want to like develop a writing profile, follow my steps. If you want to do that, I will recommend that you reach out to an editor. ठीक है, आप pitch लिखते हैं आप editor को. मैंने BNU में भी journalism पढ़ाई हुई है actually 2016 से 2017 15-16-17 में, और यही उस चीज के अंदर बताते थे कि किस तरह आप अपने आप को पब्लिश करें, right? So you write an idea to an editor, and you tell them that this is the question that I want to explore, and these are the various aspects. Would you be interested in it? And depending on what the editor says, sometimes they will change it for you. Sometimes they will amend thing for you. But like that's the best opportunity. Distortions आ रही है जी अरुण साहब.
आप जरा उसको म्यूट कर लें. Good to have you here, यार. सही बात. Thank you. Thank you Arun, जी. please mute yourself. अच्छी का बंदा है. मैं लगा हुआ. Bunty, Must be mute. कोई बात. पब्लिक रिलेशन तो एडवांसमेंट है. वो एडवांसमेंट वाले. एक minute. चलो जी, मैंने यहाँ से कर दिया. ठीक है, Okay. मसला हल हो गया. अच्छा. ओह, गुड पॉइंट लीडिया, थैंक यू. मुझे नहीं पता था, मैंने देखा तो हुआ. अच्छा जी, कहाँ पे थे आप? प्लीज कंटिन्यू कर लें. Could you repeat the question, please? क्या था, क्या था? कोई हेल्प कर सकता है? Yeah, so no, I was talking about writing in publications and writing for newspapers and magazines, Yeah. where you need to be very aware of what your audience is, right? So for me, my audience was always, like people who were interested in learning about human rights. That was my area, larger area of expertise, and those were the publications that I was writing to, right? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. So हालांकि like, अगर देखा जाए तो ये बहुत जरूरी एक एरिया है, और हमारे अपने कम्युनिटी के अंदर बहुत कम लोग ही हैं जो कि ऐसे लेवल पे लिख रहे हैं. तो बड़ी एक इंस्पिरेशनल बात है हमारे इवन जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम पे, या मैस कम्युनिकेशन के, तो या सोशल साइंसेस के, उनके लिए कि यार ये एक चीज है जिसके बाद दिस शुड बी द डायरेक्शन दैट यू कैन टेक. yes, you need to develop a profile for yourself. You need to develop a profile that anyone who you are applying to, whether it is a job or whether it is your PhD program, they should be able to see that profile on the internet, or like in newspapers or magazines, where they can develop an idea of what this person is, what they like to do, what their strengths are, and how they can contribute to your institution. Yes, सही है. सो जी, आपने फिर सोचा हुआ था कि आपने पीएचडी के लिए जाना है यूटी ऑस्टिन के, तो हम कहने के ख्वाब ही देखते होते थे स्टूडेंट लाइफ में. तो आपने भी ऐसे ख्वाब देखे होंगे कि यार यूटी ऑस्टिन जाना है, ये चीज, ये जगह जो मेरे लिए है. Acha, I'll say that it's not the institution that should drive necessarily your inspiration. So going to the process of application, how I decided to apply to begin with, right? Well, the reason why I started to want, like, I've been applying to places for a very long time. I graduated in 2011 and I thought कि अच्छा अभी time है masters के लिए निकलने का सारा कुछ. But it was not meant to be. I got rejected multiple times from multiple places. और जिधर admission था वहाँ पे fee बहुत थी, and I did not have the resources to pay for that, right? I needed a scholarship. So इस सारी क्या कहते हैं सूरत हाल के अंदर finally in 2018 a lot of things were happening. One of the things that were happening was that there was a huge crackdown on media as well. There was a lot of pressure on media houses क्योंकि ads खत्म कर दी थी इन्होंने, तो salaries 40% slash हो रही थी and everything. It was the right time to move out. और like once I made that decision कि भाई अब करना है, अब तो like industry के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो अब time है. The first thing that I did was I looked for professors whose research interests closely matched mine. At the end of the day, and in any admissions committee, your advisors or your committee, there should be at least 3 professors, at least 3, aim for 5 professors in a department जिनके research interests आपके साथ match करते हैं. क्योंकि जब आप proposal अपना लिखते हो, उसके अंदर आप mention करते हो कि like I'm going to be like, so like Adil Riaz works on this topic and this is going to help me develop my interest in this area. Abraham works on this, and like this is how it's going to help me with this. Lydia works on this area, and so all these 3 people will come together, and this is why this institution is the best for me. And that process starts very early on in July, where you start sending out emails to people. Sending out emails is absolutely important. Even before I started writing my emails before I gave my GRE. You want to mute that again? Yeah. Okay.
So writing to the professors and writing research and developing a research You connection have to there. develop a contact, a connection with your professor, right? Where your professor, where you're writing to that professor being like, आपने ये किताब लिखी थी, इसके अंदर ये जो बात थी, उसने मुझे, you know, like बड़ा motivate किया to, you know, follow this line of inquiry. And this is why I think that it would be amazing if I worked with you as as your student, right? And professors really like to hear about this stuff. They love hearing about the fact that somebody is reading their work and that somebody thinks that their work is worth building on as well, right? It's a give and take, because when you become a PhD student, you are no longer a student, you are a colleague, because you're also TAing and you're working at the same time, you're teaching, right? So that, you know, that relationship between teacher student is somehow, you know, like more equal at a PhD level, because it's a give and take at that point. So it's very important to first write to all the professors that you can think of. Spread your net as wide as possible. Don't just be like, oh acha ye Harvard जाना था मैंने तो मैं तो Harvard ही जाऊंगा, ऐसे नहीं. आप बंदा देख के उसको अप्लाई करें. हो सकता है हार्वर्ड पे कोई प्रोफेसर ही ना हो जो आपके साथ काम करना चाहता हो, या जिसके यू नो रिसर्च इंटरेस्ट आपसे मैच करते हो सकता है वहां पे कोई भी शख्स नहीं है जिसने कभी पाकिस्तान पे रिसर्च भी किया, राइट? सो लाइक ये चीजें देखने की जरूरत है. And that's was something that I was very successful in, thankfully, when I was applying. So I wanted to apply to Charlie Hale, who was the head of the activist anthropology study, you know, wing in the UT Austin's anthropology department. But Charlie Hale had left that same year, and he had joined UC Santa Barbara. तो उसने फिर मुझे कहा कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, तुम यहाँ पे अप्लाई कर लो. Then I was like, हाँ तो ठीक है, काम आपके साथ ही करना था. Anyway, so I applied to Santa Barbara to work with Charlie Hale, and I applied to UT Austin to work with Dr. Kamran Azhar Ali, who is now my advisor, and he was also the Dean of Social Sciences at LUMS for the last 3 years, but now he's going to be at UT Austin full time. So you know, like आप इस तरह आपके multiple जगहों पे आ जाते हैं admissions. आप, you know, if you find a faculty member who's willing to work with you, that is your first step in. And that is how I managed to get multiple admissions when I applied in 2000. How many? Well, I applied to 2 and I got into 2. Acha, you just applied into 2? Acha. I just applied to 2. Oh, okay. But most importantly, you were looking for professors. ये तो बात है जी, जेन्युइन ये एक है बात. आपने ज्यादा अपने इंटरेस्ट जहाँ ज्यादा आपने फोकस रखा हुआ था जो रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करने पे, है ना? तो उस वजह से आपने उस पे काम किया और उससे आपको कम जगह पे अप्लाई करने से काम बन गया. ऐसे ही है? सही है. सो डेवलपिंग द रिसर्च क्वेश्चंस पे बात हो गई है, और इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक था कि गेटिंग इन टच विद द प्रोफेसर्स, उस पे भी बात हुई है. What else you want to guide about getting into PhD over there? I think that it is very important to have, so in my application process, I realized that it was never my application. Okay? Research is always collaborative. Therefore, even applying for research is collaborative. So it is important to speak to whoever you can about your project. Take your proposal to your, you know, like instructors, right? Show it to them. Ask them for advice and everything. Interrogate yourself, interrogate your question, and you know, like I showed my proposal to at least 3 professors before I sent it to the admissions committee. Achha. Yes. So that is also something very important. Do that. Work with teachers. Work with people who can guide you, and if you can find a good mentor who can, you know, guide you through that process. Nothing better than that. Very good. Yeah. So the 4 years is crucial. The 4 years bachelor's वाला टाइम जो है आपका बड़ा क्रूशियल है. आपने अगर फ्यूचर का रिसर्च में जाना है, उधर से आपकी वो माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि जी एकेडमिक जो नॉलेज है उसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट करना है आगे जाके, तो मैंने इधर से ही अपने आप को जरा रेडी करते जाना है साथ साथ. सो सही है जी. अच्छा, क्वेश्चंस वगैरह ऑडियंस के लिए अगर हम ओपन करें. अरुण, आपका क्वेश्चन है? Oh, sorry.
जी questions वगैरह है तो आप कर सकते हैं please. Sorry. So, yeah, I got a question about how to secure a scholarship, and that is a very important question. Iske andar, well, for my PhD program at least, what we got is funding, right? All students are funded. There is, if you can get a scholarship separately, that's fantastic. Iske andar, mujhe TA-ship nahi karni padi thi to fund my education. But most universities at the PhD level, in fact, almost all in America at least, what they'll do is they'll give you 5 years of funding, which means you have a job for 5 years, 5 years teaching as a teaching assistant, right? And that is how it works. So it's not necessarily applying for a scholarship. In fact, your entire research career is about applying for grants, applying for research grant, applying for summer grant. तो वो तो होता ही रहेगा, ठीक है. एडमिशन ले लेते हैं ना, उसके साथ फंडिंग आ जाती होती है. एटलीस्ट अमेरिका के जो सोशल साइंस प्रोग्राम्स हैं ज्यादातर, उसके अंदर ये सूरत हाल है. So it's securing the admission, that's the first part. The funding thing happens afterwards, and it's usually fine. Once, you know, like if somebody really likes your project, there is no way that they're going to not give you money to do it. I will also just add one thing. अभी कल परसों अभी ये ICE की तरफ से policy आई है, ये US Immigration Customs. I don't know if you all have heard it, but they've said that international students on F1, M1 visas, they're going to be, if they're not going to get enrolled in at least 3 units of in-person classes, then they're going to have to go back to their countries, right? And this is something that's sort of giving us an indication that things are going to be really hard for students who want to apply to America, at least in the coming years. And because the government itself is creating problems for even people who have visas, imagine those who don't and are applying, unke liye kitne masle hone lage, theek hai na? Is sari cheez ke andar, like, think about what value your research can bring to, you know, the field of academy, right? To you know, like this world, and why it is important for you to sort of build your own profile, ताकि, you know, कोई बहाना ना हो किसी के पास आपको वो, you know, इस तरह तंग कर सकें और सारा कुछ. अमेरिका के अंदर ये जो बात आपने भी की है बहुत जरूरी है, तो इसको रिपीट कर दें बेशक एक दफा. No, I'm just saying that things are getting really hard for students, जो कि मैं ये कहती जिनके पास अभी वीजास हैं उनको वापस भेज रहे हैं. हाँ, like जो like एक बड़ा catch-22 सा सिचुएशन है कि या तो अपने आप को कोरोना वायरस से एक्सपोज करें इन पर्सन क्लासेस करके, या आप वापस जाएं अपने मुल्क और एयरपोर्ट पे करा लें अपने आप को. You know, it's not nice at all, and a lot of universities have challenged this in the court. But I'm just saying what this is telling us is that things are going to get harder for students applying to these countries now, right? And because it is getting harder, it is important उतना ही ज़्यादा कि मेहनत बहुत की जाए अपने ऊपर जितनी मेहनत कर सकें अपनी राइटिंग को पॉलिश करने के लिए, अपनी रिसर्च की फील्ड को वसी करने के लिए, reading as much as you can, you know, like polishing your speaking skills, your presentation skills, all of that. That is why it is really important to build yourself on merit, ताकि आपको merit की basis के ऊपर ही जो है, you know, like आपको entry मिले और सारा कुछ, और कोई, because it's getting harder for students, I will admit that. How did you improve your writing skills mainly? By reading a lot. What exactly? What do you have to read? You read what you're interested in. So as a journalist, I was reading, I mean, I was an editor, right? So I was literally reading 4,000 to 5,000 words a day in the form of news stories that I was editing, right? It's just that process. It's having a relationship with writing and with reading, having a relationship with words. How much time do you spend with words a day? Ask yourself, right? Like, do you read? And if you don't read, what can you write, right? So it's reading that has to lead that writing process, and what you're going to read is going to be informed by what you're interested in, right? If you're going to be like, you know, if you're a biotech student, you're going to read things that are relevant to your field. You're not going to read the crime reports of a newspaper, right? So just like read things that are relevant to your area of interest,
and then try to write it and reproduce what you have read in a better way is a good place to start. Right. Obviously. Ji, thank you so much ji. This is really helpful. काफी बच्चों का इसमें फायदा होगा, बड़ों का भी फायदा होगा, सही बात. जी और क्वेश्चंस जी किसी के? I have a question, sir. अदील भाई. कुछ स्टूडेंट्स जैसे एफसी में या ये सारा बहन ने तो लम्ब से किया है, इस चीज को बॉदर नहीं करते कि हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वो बॉदर करते हैं हम अपना जीपीए कैसे गेन करेंगे. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका 3.5 है या 6 है लेकिन आता कुछ नहीं उन्हें. उनके लिए भी कुछ सजेशंस यहाँ रखी जाएं कि अपनी 4 years डिग्री को जैसे इन्होंने सीरियस लिया कि इनको पता था कि मैंने आगे ये काम करना है जाकर. हमारे कुछ स्टूडेंट्स मार्केट में देखा गया है वो रुल रहे होते हैं, जीपीए 3.8 है लेकिन आता कुछ नहीं है. मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि घूम रहे हैं बस जीपीए लेकर, सिर्फ जॉब नहीं है, जॉबलेस है अभी तक. उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं वह? मैंने ये पहले भी ये बात की थी कि एक जो फर्क like it's one difference that I did see between the conceptual sort of form of learning जो कि लम्स आपको push करता है is कि रट्टा नहीं लगाना. It is not enough to know knowledge. It is not enough to know what like Haroon has written in this theory. It is not enough to know कि अच्छा ये हमने सब कुछ आता है. It is more important for yourself to place yourself out of those traditions and to think critically. Learn how to question. It is only when you start to analyze and critically, seriously think about what you are reading, what you are being taught, and then challenge that as well in order to, like create new information and sources of knowledge. ये चीजें थोड़ी सी आपको edge देती हैं. अपने हमारा जो educational model है, वो है about imbibing knowledge, whereas it needs to be about critiquing knowledge. So critical thinking skills is something that I will say needs to be brought into our educational models in how we think and how we approach careers as well, right? At least मेरी ये strength रही है कि मैंने like by questioning what is going around me, I have managed to find novel ways of developing research questions, right? So सवाल उठाएं. बिल्कुल सही सवाल, क्वेश्चन थिंग्स, बिल्कुल सही. इसके अलावा जी हमारे पास और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर सभी कोई क्वेश्चन कर सकें ना कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी. और थैंक्स फॉर एडिंग दिस अमेजिंग वैल्यू टू द पेज. हमने पेज बनाया जी, इस अभी मैं थोड़ा सा टाइम है, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं करना तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करें, क्योंकि कोशिश यही है कि इसमें हम बहुत अवेयरनेस वाली शेयरिंग वाला एक माहौल क्रिएट करें और इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला माहौल क्रिएट करें, क्योंकि मेन जो हमने देखा है कि हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. सो इसको हमने जो 1000 मेंबर्स के बाद ना इसको हमने ओपन कर देना है. जिसने भी आके इस पे एजुकेशनल या कोई अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए थ्रू एजुकेशन कोई एक्टिविटी करनी है, कोई सेशन करना है, तो दे आर मोस्ट वेलकम. सो इस तरह का इसमें एक क्रिएट करने का प्लान है, तो आप प्लीज ज्यादा इसको शेयर करें. ठीक है जी. क्वेश्चन आया एक प्लीज. proposal लिखने के tips दें. Right, so research proposal, at least for an anthropology proposal, is different from other proposals. I would say I would just anthropology proposals. Probably want to mute Haroon again. Thank you. Well, because anthropology is embedded in the field, it's very similar to journalistic writing. Therefore, like I started with like with a narrative of where I'm placing myself, and my proposal was around studying the experiences of Shantinagar, of Gojra, and other places that have been visited by violence. Sorry. And so I mean that's how. So I started by situating myself in those places, describing what the situation was like.
then engaging with the theories and the debates that are happening. So that's something that I will stress again. It is very, very important for you to be aware of the latest work that's being done in your area of interest, right? Sorry. There, for anthropology, I mean, there are journals available online that will give you some idea of what the current debates in academia are. And that's a good place to start to understand where you are situating yourself, right? So just give me a second. I need to mute myself. जी इब्राहिम साहब, आपका भी हमने सेशन करना है अनकरीब, ठीक है? तैयार हो जाएं आप. अच्छा जी, हाँ जी, प्लीज. Yeah, so हाँ, I mean, रिसर्च प्रपोजल के हवाले से मैं यही कहूँगी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखें कि इसके अंदर आप किधर अपने आप को सिचुएट करें डिबेट्स के अंदर, सबसे सॉरी, और डिपार्टमेंट में कौन से लोग हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं सारी चीज में. So you have to write their names and you have to say that this person can help me engage with this topic, and so on. अच्छा जी, इस सारे प्रोसेस में एक और भी है कि एक तो है सिर्फ और सिर्फ लिखना पढ़ना, ठीक है, और दूसरा है प्रैक्टिशनर्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड को, वो एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम कर रहे होते हैं. तो क्या उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं डायरेक्टली पीएचडी में? कि उनको भी जारी बात है कुछ ना कुछ तो लिख के दिखाना ही पड़ेगा आगे, लेकिन क्योंकि आप भी थी, प्रैक्टिशनर भी थी, ठीक है? सो आई थिंक हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली, you're absolutely right कि मुझे मेरी अंडरग्रेड डिग्री की वजह से एडमिशन नहीं मिला था, मुझे मेरी जर्नलिज्म वर्क की वजह से मिला था. So your practical work is actually your strength, as long as you write it about it that way, right? Like if you are, for example, working in the non-development sector with an NGO and your work takes you to, you know, a remote place जहाँ पे आप एक project कर रहे हो, how can that experience, you know, bring new questions of, you know, like allowing you to question like something about your, you know, interests, right? Like, so think of how your work connects to your research and bring them together, because आपका practical ही काम है जो आपको edge देगा. It is not your degree, like necessary. इस तरह इरफान साहब ने भी बात की थी कि आपके, you know, आपकी 3.8 GPA तो होएगा, लेकिन आखिर में आपको नौकरी नहीं मिल रही. और उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि नौकरियां, frankly speaking, are all based on networking, right? If you know people who are in a position to hire, or if you know people who are well placed in places, then you can actually get a job in those places as well, right? These are some of the skills that you need to develop even when applying for your PhD, right? Your network needs to be very strong and it should show in your proposal. इसमें क्वेश्चन अगर किसी और का है तो मैं I'd like to request इब्राहिम कि आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाँ, आपका क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है? प्लीज. मैंने सवाल कर दिया पहले. हाँ, पहले सवाल करो, ठीक है? अच्छा, मुझे जर्मनी से भी रिजेक्शन आई थी और यूके में जब किया था तो उसके पैसे नहीं थे. So it's not that I always considered the US for a PhD, but I do think कि जो 3 साल का कोर्स वर्क कराते हैं आपको यहाँ पे PhD के लिए, वो आपको एक एज देता है. So अगर आपने अमेरिका में नौकरी करनी है या लैटिन अमेरिका में या कनाडा में, chances are if you have a US PhD तो आपको ज्यादा आसानी से मिल जाएगी क्योंकि आपके ज्यादा साल हैं उसके अंदर. Even though like UK में आपको मास्टर्स करने के बाद PhD एडमिशन मिलता है, यहाँ पे ये सीन नहीं है. But somehow this is considered to be more rigorous and like in line with their tradition. So it works for me, I guess. जी जी, ठीक है इब्राहिम, हो गया. इसमें अदिल भाई, ये कितना टोटल टेन्योर है आफ्टर बीएस ऑनर्स? हमें कितने साल, मसलन कि पीएचडी में 7 इयर्स प्रोग्राम है, 5 इयर्स प्रोग्राम है, और अगर कोई एमएस करता है या मास्टर करके अप्लाई करता है इसी प्रोग्राम के लिए, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बंदा बीए ऑनर्स या बीएस ऑनर्स के बाद अप्लाई कर रहा है और एक अपना मास्टर यहाँ से कंप्लीट करके फिर अप्लाई कर रहा है. इसका जरा टेन्योर बताएं हमें. हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका. उनका सेम ही है नंबर ऑफ इयर्स. तो जो 5 साल का जो वीजा लगता है, 5 साल की फंडिंग मिलती है. 5 साल इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेलरेटेड न्यू टाइमलाइन फॉर पीएचडीज इन अमेरिका. इससे पहले एक हमारे साथी हैं, उनका 12 साल का पीएचडी की है एंथ्रोपोलॉजी में. सो वो अब कम कर रहे हैं.
हाँ, so now it's 5 years. But वही वाली बात कि अगर आपका जो background है, जिस तरह ये बात करें कि आपका BSc के बाद किस तरह से हो जाता है admission इसमें, it's just that I have 6 years of like extensive writing and journalism experience that allows the university to assess then कि अच्छा जो skills जो हैं हम सिखा सकते हैं इनको, अपने इलाके के बारे में पहले ही सब कुछ पता है, या अपने इलाके के बारे में इतना कुछ लिख चुकी हैं कि हमें इतना उनको आगे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. So they make that judgment कि okay, we can place it in the same program as people with a masters. इट्स मीन कि हमारा प्रैक्टिकल जो वर्क है आफ्टर BS ऑनर्स या BA ऑनर्स वो 4 ईयर या 5 इयर्स है, वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा. लेकिन अगर हम डायरेक्ट BA ऑनर्स करके अप्लाई करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो एडमिशन देते हैं. इट्स मीन कि आप अपनी वर्किंग कर चुके थे, जो एक्चुअली रिसर्च में ये होता है कि अगर अपना सिनॉप्सिस आपने पहले आपका रेडी था कि मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये हेल्पफुल हुआ, अदरवाइज वो आपको ना लेते. Absolutely. And even if it's not your job, like for example, say you're a banker, right, and you want to apply for anthropology, they don't match, right? But if you find a topic that is connected to banking and you want to do it within the realm of anthropology, all I'm saying is you connect your practical life and you show how well positioned you are to deal with these questions, whether it is in the form of activism जो आपको embed करती है अपने टॉपिक के अंदर, या आपकी like proximity कि आप वहां पे रहते हैं क्योंकि इसलिए आपने चीजें तब्दील होते हुए देखी हैं और अब आप इसके ऊपर ज्यादा commentary अच्छी कर सकते हैं, and so on. You have to position yourself relative to your topic, right? And I would suggest कि नहीं, right after BA is not a good time to even apply, because it's going to be a big खर्चा भी होएगा और it will also be disheartening कि जब rejections पे आते हैं फिर. ठीक है, सही है. So तकरीबन कितना आप कहते हैं कि थोड़ा सा आपके पास कुछ दिखाने के लिए कुछ मटेरियल रेडी हो तो कितने साल में वो हो जाता है? 1 साल में भी हो जाता है? मुझे तो 6 साल लगे थे. अच्छा, साल 2 साल वाले भी आपने देखे होंगे जी, एकदम से ही आगे अभी ग्रेजुएशन हुई है तो उधर से आगे PhD के अंदर आगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा? अच्छा, ठीक है. अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, एक इब्राहिम अख्तर मुराद साहब, इनका थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाह रहा था. भाई साहब, आपने भी UK से भी मास्टर्स किया है, तो आप अगर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि आप, मुझे याद है आपका कुछ रिसर्च टॉपिक ऐसा था कि आप पूरे पाकिस्तान में जाके क्रिश्चियन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कोई ना कोई स्टडी करते होते थे, तो क्या उसने भी आपको हेल्प किया? और उसका थोड़ा सा बताएं. एक्चुअली मैं इसलिए नहीं ऑनलाइन आया था. नहीं कोई बात लेकिन वेल मेरा इंटरेस्ट रहा है. मैं सारा की तरह एक्चुअली मैंने थोड़ी देर काम किया था FC कॉलेज में, तो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी का ग्रांट था जो एक पुराना 1840s का जर्नल है नूर अफशां के नाम से, तो वो डिजिटाइज कर रहे थे. तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मेरी पहली जॉब जो थी वो एक्चुअली एक रिसर्च एसोसिएट थी उस नूर अफशां के ऊपर बेसिकली काम करने के लिए. तो वहां से मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कॉलोनियल तारीख पढ़ने का, वैसे तो अब मुझे भी एक्चुअली कुछ 4-5 साल फिर मैंने नौकरी करता रहा, रिसर्च भी करता रहा. तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं हिस्टोरिकल स्टडीज करता हूँ. मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट अपनी डिग्री कंप्लीट की है रॉयल हॉलवे से फ्रांसिस रॉबिन्सन के साथ, और मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है 1850s से लेकर सॉर्ट ऑफ 1920s की सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशंस, पंजाब जो ग्रेटर पंजाब है सॉर्ट ऑफ एरिया के लिए. और मैं मिशनरी ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स देखता हूँ जिसमें ऑफ कोर्स प्रेस्बिटेरियन भी बड़े आते हैं. तो उसमें मुझे मिला था मौका काफ़ी आर्काइव्स जाने का. तो जिस तरह बल्कि सारा भी बता रही थी कि अगर आप तारीख में इंटरेस्टेड हैं तो आर्काइव्स कितनी इंपॉर्टेंट है. बाइबल सोसाइटी भी है, अगर आप देखना शुरू करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेट आर्काइव्स हैं जो लोगों ने रखी हुई हैं. फिर हमारी नेशनल और फेडरल जो आर्काइव्स हैं वो भी हैं. क्योंकि मुझे शौक था आगे, तो मैं पेपर लिखता होता था. आई रेजोनेट कंप्लीटली जो सारा कह रही हैं कि लिखना पब्लिश करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करें इफ़ यू कैन तो कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आप प्रेजेंट भी करें, क्योंकि दैट रियली डज हेल्प. तो मैं भी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेजेंट करता था, और मैं
मैं प्लान ऐसे करता था कि मैं ढूंढता था कॉन्फ्रेंसेस जो किसी आर्काइव के पास हैं, तो कॉन्फ्रेंस वाले फिर पैसे देते थे पेपर पढ़ने के लिए, तो उस पेपर पढ़ने के बाद मैं थोड़ी रिसर्च भी कर लेता था। तो मैं येल गया, तो वहाँ पे काफ़ी प्रेसिडेंट मिशनरीज की आर्काइव है, वहाँ भी मैंने काम कर लिया। मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क गया था, तो उन्होंने थोड़े और पैसे दिए, तो फिर मैं फिलाडेल्फिया चला गया। फिर एक दफ़ा शिकागो पेपर पढ़ने गया, तो वहाँ पे आर्काइव के ऊपर काम कर लिया। फिर एक दफ़ा इसी तरह इंग्लैंड गया बड़ी दफ़ा, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आई थिंक बाद में फिर जब मैं अप्लाई भी कर रहा था डिग्रीज के लिए, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पे लगता है कि आप कंसिस्टेंटली इंटरेस्टेड हैं रिसर्च सर परसूट के लिए। तो आई थिंक वो ऐसे ही, आप चाहे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हों, आप कोशिश करें किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होने के लिए, एज एन रिसर्च असिस्टेंट शिप हो, आपकी एज एन इंटर्नी हो, चाहे आप अगर सोशियोलॉजिस्ट हैं तो कोशिश करें किसी सोशियोलॉजिस्ट के साथ हैंग आउट करने के लिए, उनको कहने के लिए कि मैं आपको हेल्प करूंगा आपके पेपर ट्रांसक्राइब करने के लिए, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इससे आपको वैसे भी फील्ड के बारे में पता लगता है, और इस तरह लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपको आपके प्रोजेक्ट को भी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। जबरदस्त जी। जस्ट ये ट्रेलर था जी नाजरीन, हम इनका एक डिटेल में करेंगे बाद में इंटरव्यू। बट कमिंग बैक टू सारा, आप कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, और पीएचडी का मकसद भी आप थोड़ा सा बताएं कि जी ये असल में उन लोगों को इसमें आना चाहिए जो वाकई पैशनेट हो अपनी फील्ड के बारे में, या जो वाकई इसमें आगे को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो और कर सकते हो। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें जी। हर कोई पीएचडी, जैसे मेरा कोई इंटरेस्ट इतना अभी है नहीं है पीएचडी वाला लेकिन उनको किसको आना चाहिए इस फील्ड में, ये भी जरा बता दें। जिनको बहुत ज्यादा लिखने का और पढ़ने का शौक है उनको आना चाहिए पीएचडी। बहुत लिखना पड़ता है, ऑन एवरेज हफ्ते के 2000 लफ्ज तो कहीं के भी नहीं गए, और 1000 पेजेस से ज्यादा पढ़ना पड़ता है एवरी वीक. इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट नेवर एंड्स. सो यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू बी वेरी पैशनेट. इट इज नॉट इजी. I really miss my life as a journalist sometimes. कि बहुत चिलिंग था. हालांकि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी थी, you know. So imagine if that was more chill than this. So हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. If you are up to the task, this इससे ज़्यादा rewarding field भी कोई नहीं है, because you about the GRE exam. I heard that Fulbright recently removed the requirement for a GRE. GRE, हाँ? वो सिर्फ अभी के लिए एप्लीकेशन उसके बगैर कर सकते हैं, बाद में उसकी जरूरत होगी for sure. सही है. Okay, so I mean, if you're applying in the social science area, your verbal exam is going to count. Work on your verbal, because that is the first indication of your language skills, and it is all about your language skills when you're applying for a PhD to, you know, like such a country, right, to America. And जो quantitative है section, उसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. But if you manage to get good grades on both exams, you are actually eligible for fellowships and scholarships that the university will throw at you. This is, I mean, I'm not saying it's going to be guaranteed, but I know people who got scholarships for a year or two just because they had really stellar GRE scores. So I will कितना होना चाहिए कम से कम? 170 में से होता है ना, तो है ना 180 I think. No. क्या ख्याल है जी, किसी ने दिया आसपास? 150. So 175 के आगे पीछे दोनों में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है. It's 170. 170, okay. Yeah, it's 170. And so I mean, I know someone who got an admission in their program after getting 148 in the quantitative section, which is quite low if you think about it. But because quantitative isn't required for your degree to at all, like it's not a skill that's necessary, the admissions committee does not consider or give it too much importance, right?
जो मेरा GRE स्कोर था, अगर मुझे याद पड़ता है, मेरा 162 था वर्बल और 158 था क्वांट. ठीक है. वाह जी, आपने शेयर कर दिया, थैंक यू. ये बड़ा गाइडेंस मिल जाएगी लोगों को. सो आप एनालिटिकल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि 0 to 6 का क्या मतलब है. मैंने ये जब दो दिया लोग था आपका चेक करते हैं पेपर. It's an essay and they give जी. you a prompt and the whole purpose is to check your critical reasoning skills, in which you're given a paragraph but then you asked a question like as a prompt, like think critically about it, and you have to point out various, either it is the fallacies that you find in the argument that is being made in that paragraph, or it is something like outside information that you want to bring to it to sort of like complicate whatever is being said in that paragraph that they give you as a prompt. So the analytical portion is all about checking कि क्या आप इस छोटे से डब्बे के बाहर भी सोच सकते हैं या नहीं. ठीक है. And that is the measure on which it is graded. And obviously, you know, grammar, वो सारी चीजें लिखना आना चाहिए. मेरी नजर पड़ी मेरे GRE स्कोर के ऊपर कल परसों, तो 3.5 था, जो कि परसेंटाइल में देखा जाए तो बहुत लो था. सो ये भी है कि जी अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए. लाइक जितने भी लोग GRE टेस्ट हिस्ट्री में देते हैं उनमें ज्यादातर का किसका टॉप का, इस पे थोड़ा सा, तो 4.5 maybe can be good, like 5 can be really good. I got a 4.5, I think. Okay. But I know the like another friend of mine who was doing their PhD, their GRE at the same time got a 5, and other people, like 5 is something that people can get easily. And I was really sad कि मेरा थोड़ा सा low था, as like I thought 4.5 was a bit low compared to what my friends were getting, but हो सकता है नहीं मेरा 5 नहीं था. 5 is a good score to get. Aim for a 5. सही है. जबरदस्त. तो जी आई थिंक अगर क्वेश्चन और नहीं है तो थोड़ा सा इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं. एक क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन अदील भाई. सारा बहन ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा PhD में पढ़ना पड़ता है, बंदा पागल हो जाता है. कुछ स्टूडेंट्स MPhil के बाद परसू नहीं करते, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स मैंने देखा है. वो एक मिथ बनी हुई ना. मैं खुद PhD कर रहा हूँ, मेरे 6 रिसर्च पेपर मैंने भेजे हुए हैं. तो आपका क्या रूटीन है? पर डे कितना पढ़ते हैं या वीक में कितना पढ़ते हैं? लाइफ वो कहते हैं एंजॉय नहीं होगी, बंदा पागल हो जाएगा. मेरे नजदीक नहीं है, मेरी जर्नी बड़ी स्मूथ चल रही है. मैं कहता हूँ एंजॉय करता है बंदा अपने सफर को. आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए PhD का वो कहते हैं ना फिरा हुआ दिमाग, ये झूठ है. There's no truth in that. अच्छा नहीं, it's fascinating. Like if you like, you should not go for a PhD if you don't like to read, research, to learn. अगर आपके पास you know, like if you have a drive to learn, then it is the best field for you, right? Like you're going to get to learn so much. But obviously it is also mentally taxing as well. I will not say that, you know, like PhD students don't have mental health problems, in fact, right? Because the pressure around deadlines, the pressure to get grant applications in, the pressure to get research publications accepted, that gets a bit too much sometimes. However, it is also important to ground yourself, to center yourself, to not make your life all about your work, and to find other things to enjoy as well. I enjoy watching shows, for example, right? And, you know, like playing Ludo and dominoes with my friends. तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. नहीं, आप enjoy भी करें. जी. इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये भी बताया जाता है ना कि आप ना जाएं इसमें, आपने फर्दर नहीं पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, बंदा पागल हो जाएगा. मैं जानता हूँ MPhil स्टूडेंट किया है उन लोगों ने, लेकिन वो PhD में डर जाते हैं. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पर डे कितना टाइम देते हैं? वीक एंजॉय वीकेंड करते हैं, नहीं करते हैं? कितना टाइम संडे को आप आफ्टर चर्च या चर्च के बाद क्या करते हैं? कुछ ये भी स्टूडेंट्स को जरा बताएं कि ये कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, लगे रहा बंदा किनारे लग ही जाता है ना. मैं एज ए मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के कुछ स्टूडेंट्स वो हिल जाते हैं. मैथमेटिक्स में ना बंदे हिल जाते हैं, वो कहते हैं लगे रहते हैं. आप कितना पढ़ते हैं पर डे? क्या आपकी रूटीन है? स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? I would say it is important to approach it as a 9 to 5 job. ठीक है, ये एक नौकरी की तरह है, सही है.
इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और you know, like just when I was talking about my journalism experience, it was like कि सुबह 9 बजे से calls हमारी शुरू हो जाती थी. अच्छा ये यहाँ पे event हो रहा है, ये हो रहा है, sign हो रही है, stories सारा कुछ. And I guess I don't know, like that's a different kind of getting involved, and you know that's a different kind of passion where you know everything is changing rapidly every day. But PhD sort of allows you to ground yourself a bit. थोड़ा सा आप slow down करते हो. It's more about slowing down in terms of thinking. That at least has been my experience, where you know like my last 6 years were all about breaking news. This has happened, that has happened, idhar jao, ye dekho, wo karo, ye likho. Now it is about slow thinking. Humne jo, you know, like whatever I'm studying, how do I sit with that, and how do I, you know, analyze it slowly based on the evidence I have before me instead of jumping to conclusions. So at one level, yes, you're absolutely right, where it takes up a lot of time, but I think it is a good practice to keep it 9 to 5 and then have a downtime for yourself as well. So that is something I stick to. Interesting perspective. Very good. So thank you so much, everyone. End pe just closing remarks mein, if you want to say something about this initiative, we are trying, you know, our best to do this thing. You know, this is something which a lot of people are part of already, and you also have added a lot of value in this. So I want to thank you as well. So your thoughts on this entire initiative? Right. No, I do have a lot of thoughts on this actually, because I was thinking of I was thinking of like the utility of having a bunch of people from different parts of the world, different parts of the country, sit together, talk about their ideas. What it's doing is it's developing a network of people. And as I mentioned earlier as well, networks are everything. You want to get a good job, place yourself in a good network that is well placed elsewhere as well. And I think in this particular, you know, group, everyone is well placed, right? Like they're alumni, they're students, they're, you know, researchers, they're people who are doing jobs. So it's a great way to bring people together, to have, you know, ideas shared around them. And this is what hum hi ek dusre ki madad karenge aage. This is the message that, you know, like that comes out of such groups and, you know, opportunities. So thank you. Amazing, Ji. Thank you for this. Thank you so much for this, and thank you for your time. Best wishes to you, to everyone. We look forward to more of such sessions, such type of sessions. और आप भी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप समझते हैं कोई इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटीज हैं हमारी कम्युनिटी में जो कि दूसरों को इंस्पायर कर सकें और दूसरों को गाइड कर सकें कि जी ये भी दुनिया है एक, ये यूटी ऑस्टिन में आई डिडंट नो एनीवन बिफोर कि जो इधर गया हो अपने जानने वालों में से, बट नाउ आई नो यू. सो अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग फीलिंग. सो बेस्ट विशेस everyone, and thank you so much for having me here. It was wonderful talking to all of you and learning from you as well, and listening to your experiences as well. It's been great. Thank you. Thank you so much. Take care. God bless you. Thank you, everyone. Bye bye. God bless you too. Take care.